Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 100 MCQs of Victorian period part 2nd. Before this, I have completed question number 1 from 1 to question number 23 in Victorian part 1st. So dear friends, these questions are very important competitive point exam point of view. So if you like these sentences, then please like, share and subscribe it. Let's start. Question number 24 is in this part. इस पार्ट में 24 से टू 48 तक के क्वेश्चन हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द वाइफ ऑफ एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो वाज prototype of the heroine of his. Option A, Kavenga Hiawatha. Option C, Caramoes. And option D, Hyperion. So the correct answer is Hyperion, option D. Next question number 25. Music that gentler on the spirit lies than tired eyelids upon the tired eyes. The above lines occurs in the Tennyson's. Option A, tears, idle tears. Option B, in memoriam. Option C, Maud. And option D, the lotus eater. So the correct answer is option D, the lotus eater. Question number 26. Poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty. Who among the following made the above statement? Option A, Dr. Johnson. Option B, Sidney. Option C, Matthew Arnold. And option D, Wordsworth. The correct answer is option C, Matthew Arnold. So, dear friends, if you listen these questions, then you can learn these easily. So, question number 27. The sensation novel. Again, the sensation novel containing a mystery story is associated with option A, Vicky Collins. Option B, W.M. Thackeray. Option C, E.M. Foster. And option D, Charlotte Bronte. So, which one is the correct answer? The correct answer is option A, Vicky Collins. Vicky Collins novel containing a mystery story is associated with Vicky Collins. Next question number 28. Browning believed that all poetry was putting the infinite within the finite. Again question. Browning believed that all poetry was putting the infinite within the finite. Option A, yes. Option B, no. Option C, maybe. And option D, none of these. So the correct answer is option A, S. The yes, option A is the correct answer. Question number 29. 29. The pre-Raphaelite aimed at. जो pre-Raphaelite पोएट्स होते थे वो किस चीज़ पे एम करते थे? ऑप्शन ए, पिक्टोरियल रियलिज्म विथ सिम्बॉलिक ओवरटोन्स. ऑप्शन बी, शोइंग इंटरेस्ट इन द मेडिएवलिज्म. ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड स्पिरिट. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. सभी प्रॉपर्टीज होती थी ये जो पिक्टोरियल रियलिज्म विथ सिम्बोलिज्म ओवरटोन्स, showing interest in medievalism, and union of the flesh and the spirit. So we can say option D, 29, all of the above is the correct answer. Question number 30. Which is the correct sequence? Dear friends, I have already told you, मैंने पहले भी बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है. द क्वेश्चन नंबर 30. Which is the correct sequence? Option A, D.G. Rasoti, George Eliot, Bronte sisters, Thackeray. Option B,
जॉर्ज एलियट, डीजी रेसोटी, ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड ठाकरे। ऑप्शन सी ठाकरे, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, डीजी रेसोटे। एंड ऑप्शन डी ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, ठाकरे एंड डीजी रेसोटे। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। First Bronte sisters, then George Eliot, then Thackeray, then D.G. Resorti. Question number 31. Which of the Dickens novel open with the words "It was the best of time, it was the bust of time"? Very important question. मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द डिकेंस नॉवेल ओपन्स, जो डिकेंस का नॉवेल है वो किस से शुरू होता है? ओपन विद द वर्ड्स "इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बस्ट ऑफ टाइम"। ऑप्शन ए टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट। ऑप्शन सी Pickwick Papers, and option D Hard Times. The correct answer is option A, A Tale of Two Cities. मतलब ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो नॉवेल होता है वो इन लाइनों से शुरू होता है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 32। सो 31 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द लाइन सी इज कॉम टू नाइट ऑकर्स इन, किस में ये कहा गया है कि द सी इज कॉम टू नाइट, आज समुद्र जो है वो शांत है, आज रात। ऑप्शन ए टेनिसंस मॉड, ऑप्शन बी अर्नोल्ड्स थेरेसिस, ऑप्शन सी टेनिसंस द लोटस ईटर्स एंड ऑप्शन डी अर्नोल्ड डोवर बीच। The correct answer is Arnold Dover Beach. Option D is the correct answer. Question number 33. Who wrote Culture and Anarchy, playfully dividing English society into three constituent classes: a barbarian aristocracy, a Philistine bourgeoisie, and an unlettered populace? Option A Matthew Arnold, option B James Stuart Mill, option C A.M. Clough, option D Ruskin. So the correct answer is Matthew Arnold, option A. Option A is the correct answer. Question number 34. Maurice and Swinburne belong to the school of poetry which rejected didacticism and moralization as one of the aim of poetry. What is this school called as? Option A Pre-Raphaelite School, option B Edwardian School, option C Pre-Modern School, option D none of the above. So which one is the correct answer? Pre-Raphaelite School. Option A is the correct answer. Question number 35. Which one of the following writers is not dealt with in Walter Pater's appreciation? Which one of the following writers is not dealt with in Walter Pater's appreciation? Option A Coleridge, option B Lamb, option C Rasoti, and option D Saudi. So which one is the correct answer? The correct answer is Saudi, option D. Option D is the correct answer. Dear friends, next question number 36. William Makepeace Thackeray works The Four George is a. विलियम मैकपेस ठाकरे जी का द फोर जॉर्ज इज जो है वो क्या है? सैटायर है, सोशल नॉवेल है, ट्रेजिडी है और सोशल कॉमेडी है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए सैटायर। विलियम मैकपीस ठाकरेज वर्क द फोर जॉर्ज इज ए satire. Question number 37. Which poem of Miss Barrett impressed Browning greatly? Which poem of Miss Barrett impressed Browning greatly? ब्राउनिंग जी को किसने इम्प्रेस किया था? किस पोएम ने मिस बैरेट की? ऑप्शन ए सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज, ऑप्शन बी द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, ऑप्शन सी Casa Guidi Windows, and option D Lady Geraldine's Courtship. The correct answer is Lady Geraldine Courtship. The option D is the correct answer. 37 का D.
Question number 38. Which poem of Browning describes the strength and weakness of a painter? Option A. An Epistle. Option B. Andrea del Sarto. Option D. The Bishop orders his tomb. And option D. Faultless painters. The correct answer is Andrea del Sarto. Option B. Andrea del Sarto. Option B is the correct answer. Question number 39. Question number 39. When Charles Dickens was middle aged, his name was linked with an actress. Very interesting question. When Charles Dickens was middle aged, his name was linked with an actress, a girl 25 years younger than him. What was her name? जब चार्ल्स डिकेंस जो थे मिडिल एज में थे तो उनका नाम जोड़ा गया था किसी एक एक्ट्रेस के साथ. व्हाट वाज हर नेम, क्या नाम था? ऑप्शन ए मैरिया बाल्डवुड. ऑप्शन बी एलन टेरनन. ऑप्शन सी मैरी होगार्थ. ऑप्शन डी सैली टेरेंस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एलन टेरनन is the correct answer. Question number 40. In which of poem expresses his deep sense of bereavement on the death of his friend A. H. Hallam? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. जो इन बिच पोएम ऑफ टेनिसन, टेनिसन की किस पोएम में डीप सेंस बताया गया उनके फ्रेंड के बारे में, ए एच हेलम के द्वारा के बारे में? ऑप्शन ए है अवर म्यूचुअल फ्रेंड. ऑप्शन बी इन मेमोरियम. ऑप्शन सी ओ कैप्टन ओ कैप्टन. ऑप्शन डी द डेथ ऑफ ओनन. ऑप्शन बी इन मेमोरियम इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. 41. Carlyle's Salter Resorts was written under the influence of. Carlyle's Salter Resorts was written under the influence of. Option A Italian Romance. Option B German Romance. Option C French Romance. And option D British Romance. Option B German Romance is the correct answer. Question number 42. Select the correct matching pair. Option A Sohrab and Rustam Arnold. Option B The Princess Browning. Option C Hugh Sylvain Mulverley Hopkins. And option D The Excursion Sally. The correct answer is option A Sohrab and Rustam by Arnold, and rest of are the wrong. Option A is the correct answer. Question number 43. Select the correct matching pair. Again, Dickens, Manchester, Faulkner, Yukon, Patwaffa. Option C, Joyce Belfast. And option D, Lawrence Birmingham. Which one is the correct answer? The correct answer is Dickens, Manchester. Option A, Dickens, Manchester is the correct matching pair. क्वेश्चन नंबर 44 है अ ग्रामेरियन फ्यूनरल वॉज रिटन बाय. फ्यूनरल का मतलब तो आप जानते ही होते हैं, जब कोई व्यक्ति ख़त्म होता है तो उसको जो दाह संस्कार होता है उसको फ्यूनरल के रूप में यूज करते हैं. तो अ ग्रामेरियन फ्यूनरल वाज रिटन बाय. ऑप्शन ए रैंडोल्फ क्वेर्क. ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउनिंग. ऑप्शन सी रे एंड मार्टिन. ऑप्शन डी कृष्णस्वामी. So which one is the correct answer? The correct answer is Robert Browning. Robert Browning, option B. Option B is the correct answer. Question number 45. Who among the following Victorian poet is the most sensitive to the conflict between the old and the new? Who among the following Victorian poet is the most sensitive to the conflict between the old and the new? Option A Tennyson. Option B Rasoti. Option C Browning. And option C Swinburne. So which one is the correct answer? Tennyson. Option A. Tennyson among the following Victorian poet is the most sensitive to the conflict between the old and the new. ओल्ड और न्यू माने पुराने और नए के बीच में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन थे उसके बारे में बताने वाले में टेनिसन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज रिटन बाई.
Under the Greenwood Tree is written by option A. Mrs. Gaskell, option B. George Eliot, option C. Thomas Hardy, option D. Emily Bronte. The correct answer is option A. Mrs. Gaskell. Mrs. Gas Mrs. Gaskell is the correct answer. 147. Question number Mrs. 46, sorry. Under the Greenwood Tree is written by option A. Mrs. Gaskell. Question number 47, dear friends, this is the second last question of part B. So dear friends, यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके. द नॉवेल मैरी बर्टन इज रिटन बाई ऑप्शन 46 का जो था वो थॉमस हार्डी था. अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज रिटन बाई थॉमस हार्डी. Then question number 47, the novel Mary Burton is written by Mrs. Gaskell. This one, Mrs. Gaskell, is option A is the correct answer. 47. The novel Mary Burton is written by Mrs. Gaskell. Option B George Eliot, option C Emily Bronte, and option D Dickens. So the Mrs. Gaskell, option A is the correct answer. And dear friends, this is the last question of this video. Which of the following statement is true? Option A. Browning work is more original in content than that of Tennyson. Option B. Wordsworth was the elder brother of the Coleridge. Option C. Shelley was pessimist romantic poet. And option D. James Joyce got the Nobel Prize in 1933. The correct answer is Browning work is more original in content than that of Tennyson. Option A is the correct answer. So thank you for watching this video.